Bombay High Court quashes FIR against lawyer booked for remarks on woman's character. The Bombay High Court has quashed an FIR filed against a lawyer who had been accused of defaming a woman by making remarks about her character during court proceedings. The decision highlights the protection extended to legal professionals under the Advocates Act and emphasizes the importance of safeguarding free and fearless advocacy in the justice delivery system. Background of the case. The FIR was registered against the lawyer under provisions of the Indian Penal Code, IPC, related to defamation, insulting the modesty of a woman, and the Information Technology Act. The complaint alleged that the lawyer made defamatory remarks about the woman's character while representing his client in a legal matter. The lawyer argued that his comments were made in the course of discharging his professional duties as an advocate and were integral to the case. He contended that such statements, made within the framework of legal arguments, are protected under Section 126 of the Indian Evidence Act and the Advocates Act. The High Court's observations. A division bench of the Bombay High Court quashed the FIR, emphasizing the following key points. 1. Privilege of advocates in court. The court held that statements made by advocates during arguments are part of their professional duty and are privileged unless proven to be malicious or irrelevant to the case. 2. Safeguarding free advocacy. The judgment underscored the need to ensure that advocates can perform their duties without fear of criminal prosecution, which could otherwise have a chilling effect on the justice system. 3. Contextual relevance. The court noted that the lawyer's statements were made as part of his case strategy and within the bounds of his professional obligations, thus not amounting to criminal defamation. Implications of the ruling. This ruling reinforces the legal protections available to advocates when discharging their duties in court. By quashing the FIR, the High Court has clarified that remarks made in the course of legal arguments cannot be subjected to criminal scrutiny unless they fall outside the ambit of professional conduct or are made with malicious intent. Significance for legal professionals. The decision is a significant affirmation of the independence and freedom of the legal profession. It reiterates that advocates must be able to represent their clients without undue interference or fear of legal repercussions for their arguments in court. The case also sheds light on the thin line between professional privilege and potential misuse. While the judgment protects legitimate legal arguments, it also implicitly cautions advocates to maintain decorum and relevance in their submissions to avoid overstepping ethical boundaries. This verdict is likely to be a reference point for future cases involving allegations against legal professionals for statements made in court, balancing the rights of individuals with the necessity of ensuring a robust legal advocacy system. बॉम्बे हाई कोर्ट ने महिला के चरित्र पर टिप्पणी के लिए वकील के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द किया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक वकील के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया है, जिसमें उन पर अदालत की कार्यवाही के दौरान एक महिला के चरित्र पर टिप्पणी करने के आरोप लगाए गए थे। इस फैसले ने अधिवक्ता अधिनियम के तहत कानूनी पेशेवरों को दिए गए संरक्षण को रेखांकित किया है और न्याय प्रणाली में स्वतंत्र और निडर अधिवक्ता की भूमिका को महत्व दिया है। मामले का विवरण। यह FIR भारतीय दंड संहिता IPC की उन धाराओं के तहत दर्ज की गई थी जो मानहानि, महिला की मर्यादा को ठेस पहुंचाने और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम से संबंधित थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि वकील ने अदालत में अपने मुवक्किल का पक्ष रखते हुए महिला के चरित्र पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। वकील ने तर्क दिया कि उनकी टिप्पणियां उनके पेशेवर कर्तव्यों के तहत दी गई थी और मुकदमे का हिस्सा थीं। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की टिप्पणियां भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 126 और अधिवक्ता अधिनियम के तहत संरक्षित हैं। हाई कोर्ट के अवलोकन। बॉम्बे हाई कोर्ट की खंडपीठ ने FIR को रद्द करते हुए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु रेखांकित किए। 1. अधिवक्ताओं का विशेषाधिकार। कोर्ट ने कहा कि अधिवक्ता द्वारा तर्क वितर्क के दौरान की गई टिप्पणियां उनके पेशेवर कर्तव्यों का हिस्सा हैं और तब तक संरक्षित रहती हैं जब तक वे दुर्भावनापूर्ण या मामले से असंबंधित न हों।
स्वतंत्र अधिवक्ता प्रणाली का संरक्षण। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायपालिका को मजबूत बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि अधिवक्ता बिना किसी डर के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। प्रासंगिकता का महत्व। कोर्ट ने पाया कि वकील की टिप्पणियां उनके मामले की रणनीति का हिस्सा थीं और पेशेवर दायित्वों के तहत की गई थीं। इसलिए इन्हें आपराधिक मान हानि के दायरे में नहीं रखा जा सकता। फैसले का प्रभाव यह फैसला अदालत में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले वकीलों को उपलब्ध कानूनी सुरक्षा को और मजबूत करता है। एफआईआर को रद्द करके हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानूनी दलीलों के तहत की गई टिप्पणियों को आपराधिक जांच के दायरे में तबक्कन ही लाया जा सकता।